So basically, to find the continuous convolution integral, there are two methods. Number one is the analytical method. So it is the same as calculating the convolution by hand on the paper. And the second method is by using the convolution command. But to use the convolution command is not as simple as it looks like. You have to actually take care of many of the things, और उसके कुछ rules हैं वो हम study करेंगे. So let's start with the analytical method of finding the convolution integral. We have this kind of example. We have h of t 1 minus t for time 0 to 1, and we have x of t for time 0 to 2. These functions are 0 other than these time. So the first thing is you have to define these functions. So firstly, we have to define the x1. So x1 is defined for the time 0 up till 2. Okay, this is a piecewise function. We can say 0 to 2, its value is 1, and other than that, it is 0. So firstly, define, let's suppose our time from minus to 0, and then we will define this time, which is 0 to 2, and then we define another time where the function will be 0, which is from 2 to 4, let's suppose. So after that, we concatenate this time. हमें पता है कि how to concatenate. So to concatenate some time series or some time vector, what we do, we just put them together. Now we have to give the values to these time series or time vectors. So far what we have done is we have defined a time vector, and then we have concatenated that time vector. Now we have to define the x1 the x piecewise x function, or this value of time, the function is defined as 0. वो हमें पता है because इस time के लिए function x 0 है. Then we have to define the function for this time. उसके लिए we know that the value of x is 1. So we have defined the x2 as 1s for this time. जितना ये time है उसका जो size है उस सारे size के लिए that function will be 1, and again for the next time it is again 0. So after that, what we have done again, we have concatenated these three function values, और उसको हमने एक vector की form में इस तरह लिख दिया. Okay, so in this way we have defined the x1 function, the x function. Now we have to define the h function. H is by the way, impulse response of the system. So what we have to do is we have to find the output for this particular input and for a system which has the impulse response as this one. Okay, and we know that if we know the impulse response and if we know the input, how can we compute the output? Just by integrating, but just by convolution the input with the impulse response. Okay, so now let's move to the next function, which is h of t. और h of t जो है उसको हम कैसे define करेंगे? Once again we will define the function at this time values from 0 to 1, and from इससे पीछे भी ये function 0 होगा और इससे आगे भी ये function 0 होगा, but we have defined from -2 to 0 and from 1 to 4. So let's suppose ये time series है या time values हैं, ये given है, तो इनके लिए function हम define करेंगे. Again concatenate करके time को इकट्ठा कर दिया है, and then after concatenating the time, now we have to define the function h. So for this time, for th1, the function is defined as 0. For the next time, the function is defined as, जैसे यहाँ पे given था 1 minus t, and the time is, in this case, time is th2. So h2 is simply the function 1 minus t, and again h3 is 0. After defining h1, h2, and h3, what we have done is we have combined these three functions, और उसके बाद हमने क्या करना है? Next step is to plot x and
h. Okay, so after defining x and h, now what we have to do is to plot them. So for plotting them, first we are plotting x with respect to its respective time, जो कि है tx, that is tx. After that, we have to plot h with respect to the time th. Okay, and ये जो th और h फंक्शन है, इसके लिए हमने एक डिफरेंट किस्म का डॉटेड एंड स्टेरिक टाइप का लाइन चूज किया. सो दिस इज द y लिमिट जो हमने आफ्टर viewing the signal हमने डिफाइन किया है कि दिस इज अ बेटर टाइम, बिकॉज हमें पता है कि जो x है दैट विल गो फ्रॉम इन द y एक्सिस, इट विल गो फ्रॉम 0 to 1. और सिमिलरली हमने क्या करना है कि इसी टाइम तक, इसी x एक्सिस तक के लिए हमने h को भी प्लॉट करना है, लेट्स सपोज. तो हमने क्या किया कि उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू दे दी. ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव डिफाइंड द लेजेंड. और लेजेंड के लिए एक चीज याद रखें कि लेजेंड में अगर आप ये रोमन या इस तरह के जो लेटर्स होते हैं उनको डिफाइन करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप बैक स्लैश के साथ डिफाइन करते हैं. सो बैक स्लैश टॉ मीन्स टॉ, एंड सिमिलरली आप कुछ और सिंबल्स को भी कर सकते हैं, बहरहाल. So far what we have done is we have defined the time for the x function, and then we have defined x itself. Then we have defined the time for the h function, and then we have defined h function itself. And after that we have plotted x and h here, और उसके बाद we have defined the legends. Now we want to see the result. So this is the result for both of the functions combined. एक ही plot पे हमने इसको plot किया हुआ है. So let's continue then. So just अभी तक हमने क्या किया, we have plotted t and h. So these are the two functions. This अच्छा, और साथ ही साथ हमने क्या किया है, अगर आपको याद हो, the first step in the analytical computation of the integral is, the first step is कि आप सबसे पहले you replace the time t with tau. Okay, so हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने वो जो t था उसको हमने tau से replace किया. Okay, this is just symbolic, nothing else. But what is the significance of replacing t with the tau is कि ये जो t है, now this t will be varying, but this tau is the time axis. Okay, we will be varying the t. T defines its because जब हम h of t minus tau करेंगे, that t will be the thing we will be varying. So अब हमने क्या किया है, हमने h of tau and x of tau define कर लिए हैं. This is the step 1. The step 2 is the reflection. अगर आपको याद हो, so हम क्या करते थे कि हम h of tau को लेते थे और फिर हम h of tau को सबसे पहले रिफ्लेक्ट करते थे, h of minus tau बनाते थे. So next step will be the reflection part. तो reflection part में हम क्या करते हैं कि जो h of minus tau बनाना है, तो इसका मतलब है कि जो टाइम है उसको आप रिफ्लेक्ट कर देंगे. So for that आपने जस्ट ये करना होगा कि जो उसका टाइम है उसको आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है. So now let's see what is the result. So अब आप देखते हैं कि h of t is now h of minus h of tau is now h of minus tau, और आप देख रहे हैं कि signal is reversed. So the first step is you reverse the first step you can say is कि you replace t with the tau, and the second step is the reflection part. आप signal को reflect करते हैं over the time period, over the time axis. So this is the step 2, reflection. Now come to the third step, which is shifting. Shifting में हम क्या करते हैं कि अगर आपको याद हो, so हम ये करते हैं कि सबसे पहले h of tau को रिफ्लेक्ट करके फिर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसको हम स्लाइड करते हैं. सो आफ्टर स्लाइडिंग हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, और जिस टाइम इंस्टेंट्स पे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं उसको हम प्रोडक्ट लेते हैं और उन सबको कंबाइन करके हम कन्वोल्यूशन फाइंड करते हैं. दिस इज द बेसिक फिनोमेना बिहाइंड द एनालिटिकल कंप्यूटेशन ऑफ द
इंटीग्रल, द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। तो हमने क्या किया है, रिफ्लेक्ट कर लिया सिग्नल को। अब हमने क्या करना है, इसको हमने स्लाइड करना है। तो फॉर स्लाइडिंग आपको क्या करना होगा, आपको उसको वहां से उस पॉइंट से लेके आना होगा जब देयर इज नो ओवरलैप। सो फॉर नो ओवरलैप पार्ट हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम जीरो ओवरलैप पार्ट देख लेते हैं। सो फॉर नो ओवरलैप, अच्छा एक चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखें कि ये जो सिग्नल है, इसको अगर आप गौर से देखें, इस केस में टी की वैल्यू क्या है, एच ऑफ टी माइनस स्टार, टी इज बेसिकली इस केस में जीरो है। तो आप देख रहे हैं कि जो इसका राइट एंड है दैट इज ऑन जीरो। Okay, so what does that mean? That means के the right end will be at the right point of this signal will be at t। h of tau में ये वाला जो point है, you can see that this is what, this is the value of the t। Okay, just remember this point, that this point is the value of the t, because in h of minus tau the value of the t is 0, that's why this point is 0। Okay, and if you see at this point, it means that this point is what, this is t minus 1। Remember, this is t minus 1. Why t minus 1? Because the time period of this signal, capital T we can say, is 1। So that's why this point is basically t minus capital T, which is capital T is the time period of this signal। Okay, so once again, this end of the signal is small t, and this end of the signal is t minus capital T, and that capital T in this case is 1, that's why this point is minus 1। Okay, so for now हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि इसको simply reflect किया है। Now what we want to slide। So for sliding, the first thing is you have to start from a point where both the signals are not overlapping। So तो हम इसको थोड़ा सा मजीद लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। हम टी की वैल्यू लेट्स सपोज 1 या 2 दे देते हैं। सो लेट्स सी हमने क्या फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है, टी की वैल्यू दी हुई है -2। सो हम सबसे पहले टी को क्या करते हैं, टी को -2 दे देते हैं। सो अब टी को -2 देने का क्या मतलब है, टी को -2 अगर देंगे तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है दैट विल बी एट -2। Okay, so now the whole signal will be shifted towards the left, and this point will be at -2। So now let's check the output of this code where t is -2, बाकी सारी चीजें same है। So if we see, now the whole signal is shifted towards the left side। Okay, you can see here that this signal is shifted towards the left, और ये जो इसका ये वाला end है that is at -2, और ये वाला जो end है that is at t minus t minus capital T। That means that t is -2, then जो capital T है that is you can say -1, that's why this point is -3। Acha, so the first part was where there is no overlap। हमने overlap वाला point find करना है। So to find the overlap section, what we can do is to shift this point beyond this 0 point। So we have to take t now from greater than 0। So the next stage is the partial overlap, जहाँ पे हमने time की value ली हुई है 0.5। So let's see the output now। Okay, so can you guys see that now there is an overlap। ये जो portion है यहाँ पे overlap है, ये वाला जो portion है यहाँ पे overlap है। और so if you want to highlight this portion, there is a code, there is a command by using area। हम क्या करते हैं कि area की command से ये जो ये this is the time, this is the function, हम इस time के अंदर अंदर इस function को highlight करना चाह रहे हैं। So if we want to highlight this portion, what we want to do, we want to define this function and the time period associated with this function। So firstly, time period is from 0 to 0.5, this is 0.5। So we have defined okay, so it's a better idea to not define that 0.5, but it's a better idea to define
द स्मॉल टी जिसकी वैल्यू चेंज भी करती रहे तो कोई मसला नहीं है हमें. दिस विल बी the code for the changed time as well. So for time 0 to t, in this case it is 0 to 0.5. What is the function? So to define the function, we know that this function is the slope. Okay, अब slope क्या है? Slope is actually, this is just a slope depending on the length of this function. So इसकी जो function की length है, that is capital T, so it means that the slope will be just 1 over t. Okay, so आप इसको further भी देख सकते हैं. It is just 1 by t multiplied by the time, यानी mx plus c. This is the intercept. 1 minus t by 2 is 0.5 बनता है, आप इसको देख लीजिएगा. So we have defined this function. अब इस function के लिए और इस time के लिए you want to highlight this portion. So I've already told you कि इस portion के लिए you can define the area command, और आप क्या करें, area command से आप इसको simply highlight कर लें. So you can see that this area is highlighted. Okay, now this is the area where the two signals are overlapping, और this will be the signal जहाँ पे हम इन दोनों का overlapping यानी इन दोनों का integration find कर रहे होंगे. Okay, we'll talk about integration in a while, but just move to the next section where both of the signals will be completely overlapping. Okay, so the third stage is the complete overlap. Now complete overlap कब होगी? When this signal is beyond this one point. So let's take 1.6, let's suppose in this case. So if small t is 1.6, all of the things are same. अब हम क्या करते हैं? अब हम क्या करते हैं कि टाइम ये वाला डिफाइन कर लेते हैं, t from t minus capital T up till this t जो भी पॉइंट है 1.6, और ये फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं. सो आप जो नेक्स्ट फंक्शन होगा या नेक्स्ट सिग्नल्स होंगे, those will be like this. You can see this signal is completely overlapping. These two signals are completely overlapping each other. So this point is t minus capital T, and this point is at this point is 1.6. Okay, so both of the signals are completely overlapping. Now the next stage will be when both of the signals are not completely overlapping but partial overlapping at the right side. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? t की वैल्यू को 2 से greater लेना पड़ेगा. So let's take another value of the t. Let's suppose 2.4 and repeat the process. So now the output will be this kind of. Okay, now both of the signals are partially overlapping at this point, from t minus capital T up till this point. Okay, so the next phase could be कि हम इसको बिल्कुल आगे ले जाएं और t को इतना बढ़ा दें कि there is no overlap. So let's suppose वो point उस वक्त आएगा when this point is beyond this point. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो t माइनस कैपिटल T वाला पॉइंट है वो इससे आगे होना चाहिए. तो हम t को कहीं आगे ले जाते हैं. हम t को लेट्स सपोज 3 के अराउंड ले जाते हैं. सो जी, तो हमने क्या किया है कि t को 3.6 ले लिया है. सो t is 3.6. So let's see what is the output. So you can see there is no overlap. So what we did, we started from here where there was no overlap, then we took a partial overlap here, then we took a complete overlap, then we took a partial overlap over here, and after that there is no overlap on the right side. So हमने सारे के सारे from minus infinity to plus infinity आप कह सकते हैं, because there is no overlap beyond this point. So we have covered the whole time space. So what will be the next step? हमने सारा कुछ कर लिया. ये सारा कुछ हमने कर लिया है कि इसको हमने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कर लिया. हमने सबसे पहले इसको रिफ्लेक्ट किया, फिर शिफ्ट किया, वो सारा कुछ हो गया. एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? सो the next step will be to calculate the actual integral over the points which are highlighted. Okay, so ये सारा कुछ हो गया, स्लाइडिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, ओवरलैपिंग भी हमने देख ली, हमने इसको हाईलाइट भी कर लिया. The next
thing will be to actually calculate the integral over these two signals are overlapping. Okay, so jab t was less than 0, there was no overlap. We know that. After that, जब ये वाला point आया था, let's suppose कौन सा वाला था? First partial overlap. जी, ये वाला point. So let's take this point और इसको highlight भी कर लेते हैं. Okay, so ये इसको मैंने highlight किया हुआ है. Now you want to find the integration of this function. How you'll find that? Can anybody answer me? इसका ये करेंगे कि जो x हमारे पास दो जो फंक्शंस हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो लिमिट्स होंगी वो इन दोनों की जो कॉमन लिमिट्स होगी वो डाल देंगे. बिल्कुल कि we have to apply the limits of only this time, यानी from 0 actually हम इसको yes we can say this is 0 from 0 to up till what? Up till t, small t. Okay, so what we want to do is we will apply limits. Let me see if I can write it down here somewhere. Let's suppose this is x of tau. Okay, let's suppose we have now. Let's suppose this is h of t minus tau. You know that what is the value of t at this point, and t will be this point. So t is, we know that t is whatever the value of it is. I think it was 0.5 some point जो भी है इसको हम general रखते हैं. We know that the limits will be जहाँ पे एक दूसरे को overlap कर रहे हैं, that will be from this point. ये वाला point क्या है? This is 0 and from 0 to t. Okay. Now what we want to do is take the integration of the overlapped section. So for that we will find, let's put it here. So we have to find the integral. The limits will be from 0 up till t, and we have to find the integration between the two functions. One is x of tau and the next is h of t minus tau, theta. Okay, so now what is the value of x of tau between these time limits? This is 1. So this will be just from 0 to t, this will be 1. And what will be h of t minus tau? So h of t minus tau will be, we know that the function originally was 1 minus t. So what will be h of t minus tau? So wherever there was t, now we will replace that t with the t minus tau. So now what will be the function? That will be 1 minus, wherever there was t, now we will replace that t with the t minus tau. Okay, so now this function is 1 minus t plus tau. I can write it down directly. This is just 1 minus t plus tau, d tau. Okay, so we can replace these brackets as well. We can replace these brackets as well. So this is just 1 minus t plus tau, d tau. So this is the function we want to integrate if we want to find the this portion. If you want to find the combined portion of these two signals, the highlighted portion. So अब हम क्या करेंगे? This is basically what? This is y of t. Okay, we know कि ये formula होता है, ये formula होता है integration find करने का. Okay, so this is y of t. ये y of t है. Sorry, ये y of t है और इसको हमने इस हमारे function के लिए अभी हमने इसको put किया. Okay, so I hope कि everyone have a better understanding कि why we took these two limits for the integration or why this function is just like this. Okay, अब हम वापस जाते हैं. So just remember these limits and just remember this function.
So what we want to do is, for this function, just we want to find the integration. Okay, and this is the integration command. उसके लिए आप क्या करते हैं, वो you first put the function itself and then its associated time, because हम just symbolic अभी हमने फिलहाल symbolically इसको integrate करना है, तो हम sims की command से symbolic variables define करेंगे t and r. Okay, so now what we have done is, firstly we have inserted the function itself. Function क्या था वो हमने यहाँ से find किया हुआ है, sorry ये 1 minus t plus tau. Okay, so let's call it r. Let's call the tau function r. So now the function will be 1 minus t plus tau या r. हमने क्या करना है, इसको with respect to this time integrate करना है, तो just we will integrate by using the integration command int over integrate this function f over the time period r. Now these are the limits, और हमने limits यहाँ पे identify कर ली हैं कि the limits will be from 0 to small t. So these are the limits. इसको हम क्या करते हैं, just इसको हम execute करते हैं, and we can see that this is the output. Okay, so we will note down this output. This is the output for the case when there was partial overlap on the left side. Okay, this portion. So now we will go to the next portion. ये वाला जो portion था जिसमें complete overlap हो रही थी, this is the complete overlap. For the complete overlap, what is the time period? That is important. What is the time period? That is, this is the point t, and this is the point t minus capital T. Capital T in this case is 1. So we can say that this point is t, and this point is t minus 1. Okay, so the function is same, just the limits are changed. So now the limits are from t minus 1 to small t. So let's execute this, and here it is. This is the answer for the second case. Similarly, we'll go to the next exit partial overlap on the right side, and we will find the integration. And if we find the integration, this is the integration on the right side. Similarly, after this, there will be no overlap. So you can see that there is no overlap. When there is no overlap, then there is no need to find the integral. So we have found that this is 0 over there. This is there's some value of the function over here, and there's some value of the function over here, and there is some value of the function at the partial exit, and there will be no value of the y when there is no overlap. So we have found all of the three values of the y. अब हमने आखिर में क्या करना है, आखिर में हमने सारी की सारी y की values को combine करना है और उसको plot करना है. Okay, so the final step is the plotting the complete convolution integral. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 time steps define करेंगे, from 0 to 1, from 1 to 2, and from 2 to 3. और उसके लिए ये जो functions यहाँ पे आए हैं, आपने क्या करना है, आपने इन्हीं functions को यहाँ पे define कर लेना है. Okay, this is the first function, this is the second one, and this is the third one. ये exactly वही functions हैं जो हमने यहाँ पे find किए हैं. So इनको find कर लिया आपने. इसके बाद आपने क्या करना है, इन तीनों functions को और इनके respective time with respect to their particular times आपने इनको plot कर देना. Okay, और जो भी आपको decent सा एक YLM लगता है वो भी आप कर सकते हैं. So now we plot the signal, and we get that this is the final convolution integral of the two signals. Okay, so if we summarize what we did, we started from the left side जहाँ पे कोई overlap नहीं हो रहा था, फिर हमने partial overlap वाला portion लिया जहाँ पे partial overlap हो रहा था, और फिर हमने क्या किया कि हमने complete overlap वाला portion लिया जहाँ पे complete हो रहा था, फिर हम right side पे जहाँ पे overlap नहीं हो रहा था वो वाला portion लिया, और सारों को आखिर में हमने integration करके जो आंसर आया उसको हमने combine कर दिया यहाँ पे. ओके, और आखिर में हमने क्या किया, इसको प्लॉट कर लिया. Fine. So this is the final plot of the output. So I hope there is no question in the first portion and the analytical portion. Now we'll move to the next portion, which was through the command, the convolution command. Okay,
So now, in finding the convolution integral by convolution command, you have to keep in mind some of the rules. As understood, there are multiple signals, and if you want to plot them together and then take their integral, so the first thing is that the time intervals should be same. Okay, so there are multiple rules defined for the convolution command. So first, the number one rule is that x of t and h of t should be defined in the same time interval. Okay, so if h of t is defined for, let's suppose, a 0 up till 2, then h of t should also be defined from 0 up till 2. Okay, the time interval should be same because जब हम डिफरेंट वेक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो उनकी जो लेंथ है, उनकी लेंथ शुड बी सेम. और लेंथ कब सेम होगी? जब हम दो जो टाइम इंटरवल्स हमने डिफाइन किए हैं उनका एक तो ये है कि टाइम इंटरवल एक्जैक्टली सेम हो, और दूसरा ये है कि उनका जो दरमियान वाला टाइम स्टेप है दैट शुड आल्सो बी सेम. ओके, सो लेट्स सपोज जिस तरह हमारा केस है कि हमारे केस में जो एक्स ऑफ टी है वो क्या है? दैट इज 1. Okay, and that is 1 for time 0 to 2. Okay, और इसी तरह जो h of t है वो क्या था? That was 1 minus, actually क्या था? h of t was 1 minus t for time 0 to. Okay, ये था. लेकिन जब हम कन्वोल्यूशन के लिए कमांड के लिए यूज करेंगे तो ये जो टाइम है दोनों के ये एग्जैक्टली सेम होने चाहिए. ये वाला और ये वाला जो टाइम है दोज शुड बी एग्जैक्टली सेम. ओके, जब ये दोनों एग्जैक्टली तो तब हम कन्वोल्यूशन कमांड को यूज कर सकते हैं. बट सो फॉर दीज आर नॉट. ओके, सो what we have to do, we have to जो बड़ा वाला टाइम उसको ले लेंगे और जो दूसरा वाला है उसको उसी के मुताबिक लेंगे. So what we want to do, we will define this as this. You can see that the overall जो time period है that is from 0 to 2 और ये भी इसी तरह 0 to 2 है. So now the time intervals are matched. The rule number 1 now set. Now the next rule is that if there are multiple parts of signals, तो उसमें जो time intervals है, these time intervals should not over. As I've done here, कि हमने यहाँ पे इस portion में there are basically different parts, different sub parts of the signal, so the time intervals should not overlap. We can see that this is overlapping here. तो हम क्या करेंगे? Overlap कैसे कर रहे हैं कि this is defined as t is less than equal to 1 here as well. और यहाँ पे भी हमने क्या किया कि t is less than equal, तो यहाँ पे भी equal आ गया, यहाँ पे भी equal आ गया. तो अब क्या होगा कि ये ओवरलैप हो रहा है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको लेस देन 1 डिफाइन करना पड़ेगा और इसको ग्रेटर देन 1 डिफाइन करना पड़ेगा. इन दिस केस देयर इज नो ओवरलैप. ओके, सो हम क्या करते हैं कि इसको हम लेस देन 1 डिफाइन कर लेते हैं और इसको हम इसी तरह t is greater than 1 define कर लेते हैं. Now you can see that there is no overlap. Okay, now the rule number 2 is also satisfied. Number 3 is that जो y हम फाइंड करेंगे, ये जो y जो भी आएगा, आंसर जो भी आएगा, इसको हमें ऊपर वाला जो टाइम इंटरवल है उनके स्टेप साइज के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. okay? जो भी स्टेप साइज है उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हमें कोई ना कोई स्टेप साइज तो देना पड़ेगा ऊपर के लिए. तो whatever the step size is for the case of h of t and h of t, you have to define the same step size in the case of y of t as well. Okay, so this is the rule number 3, and after that हमें देखना पड़ेगा कि if h of t और x of t और इनका जो convolution आ रहा है, if and यानी y of t, if these are matching or not, तो exact जो relationship है अगर आपने find करना है relationship, वो क्या होगा? वो होगा कि length of y should be equal to length of x. length of x क्या है? ये जो x वेक्टर था इसकी जो लेंथ है, and similarly plus length of, ये शायद हमने किसी प्रीवियस लैब में या किसी जगह हमने ये चीज पढ़ी हुई है बहरहाल. सो लेंथ ऑफ x प्लस लेंथ ऑफ h माइनस 1, यहाँ हमने शायद थ्योरी में किया था. सो दिस शुड बी द लेंथ ऑफ y. नाउ लेट्स मूव टू द
यस हेयर। सो मैं क्या करता हूँ अभी फिलहाल कन्वोल्यूशन फाइंड नहीं करता, मैं फिलहाल ये करता हूँ कि यहाँ तक फाइंड करता हूँ, मैं यहाँ तक। ओके, बल्कि मुझे पहले ये सारा कुछ बंद कर देना चाहिए सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर। जी, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने ये किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल I have defined the step size which is 0.02, then I have defined the time which is 0 to 2 for the x, and this is the function x itself. Then I have defined the time for the h, and h is a piecewise function. So what you will do, you will define from 0 to 1, and then from 1 to up till, okay. So what you can see here is that we have not started this time t2 from 1 again. What we did is we have taken a step forward so that there is no overlapping between these two times. Okay, so that's why हमने क्या किया है कि 1 के अंदर एक step add कर दिया है। step क्या है? 0.02 0.02 वैल्यू ऐड कर दिया ताकि बहुत बड़ा जंप भी ना आए और साथ ही साथ there is no overlapping of time between these two. Okay, so there's now when there's no overlap between these two time, we can define the function h1 with respect to this time, which is at 1 minus t, and then h2 is 0. Okay, now we can concatenate h and we can find the h value itself. Okay, so if we find the functions h and x, so we can see that the length of h is 201 and the length of x is 201. Okay, so what should be the length of y? Can anybody tell me? Sum of both minus Sum of 1. both? Sum of both minus 1, yes. जी हाँ, तो sum of both minus 1 का क्या मतलब है कि its length should be 201 plus 201 minus 1. Okay, 401 should be length of y. पहली तो बात ये है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? अब हम ये करते हैं कि कन्वोल्यूशन फाइंड करते हैं। ओके, हमने क्या किया, y की कमांड से सॉरी कन्वोल्यूशन की कमांड से हमने कन्वोल्यूशन फाइंड किया बिटवीन x एंड h, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, हमने सारी चीज़ों को कंसिस्टेंट रखना है। तो जितना स्टेप साइज आपने ऊपर वालों दोनों के लिए लिया है वही स्टेप आपने इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है, बिकॉज बैकएंड पे ये क्या कर रहा था, ये वो कम्यूटेशन सॉरी वो समेशन यूज कर रहा होता है। तो उसके लिए आपको वो पॉइंट्स एग्जैक्ट पता होना चाहिए जहां जहां हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कन्वोल्यूशन की कमांड के साथ आपने वो स्टेप फाइंड कर देना है कि हर इस स्टेप के बाद वो कन्वोल्यूशन फाइंड करेगा। ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड द कन्वोल्यूशन. So this is a complete vector, we will not go into that, but let's see the length of y. What is the length of y? 401. Okay, that was the length we expected. Yes, 201 plus 201 minus 1, it is 401. So it means everything is okay now. What we want to do, we want to just plot this. For that, what we have to do is define the time. Okay, so define the time for the y. अब ये जो y है उसका टाइम क्या होगा? That will be exactly the double time of the above two times. यानी above जो था वो 0 से 2 था, तो हम क्या करेंगे उसका अगर हम डबल टाइम लें, that will be from 0 to 4. So हमने क्या किया कि y के लिए for y we have defined another time which is from 0 to 2, and then we plotted the y over this time interval. Okay, so let's see what is the result of this command. So you can see this is the exact result as we found in the previous case. मेरे पास है वो पड़ी हुई है, मैं इसको let's see if I can plot this as well. Yes, so we can see that both the plots are same. So the convolution integral found by the case of analytical computations and found by the convolution command are same.